Welcome to TripChrip. Today I am going to take you a tour of Victoria Market, Melbourne. ये यहाँ की वेट मार्केट है जहाँ पे नेक्स्ट बिल्डिंग में सारा मीट, बीफ, लैम्ब और फ़िश वो सब बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और ये साथ ही उनके एक कैफ़ेज़ की तरह बने हुए हैं, मतलब छोटे छोटे एक्चुअली वेट मार्केट के अंदर ही स्टॉल्स बने हुए हैं फूड कोर्ट की तरह, जहाँ पे कुछ वो मैरिनेटेड कुछ पका के अपना पैटीज़, पाइज़ और कुछ सैंडविचेस, बर्गर्स, रोस्ट चिकन, इस तरह कैंगरू मीट और ये सब चीज़ें वो कुछ पका के देते हैं आपको और कुछ वैसे भी सेल करते हैं। और ये बाहर कैफ़े बने हुए हैं, लोग सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है, वेदर बहुत नाइस वेदर है, तो इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं और गर्मी तो है ही नहीं ऑब्वियसली। ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे वेट मार्केट में चीज़ें मिलती हैं और ये बाहर कैफ़े बड़े अच्छे अच्छे नाश्ते हैं जहाँ पे लोग बैठ के नाश्ते कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा वन डे मेलबर्न टूर दिखाऊंगा, जो कि आप ये ट्रैम यूज़ करके सिटी के अंदर हमने किया था। और इसमें आपको अपनी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्किंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें शॉपिंग बेल्ट्स और इस तरह सिटी में ये ट्रेन चलती है। यूनिवर्सिटी के बाहर से हमने RMIT यूनिवर्सिटी के बाहर से ट्रैम पकड़ी और उसके बाद कुछ वॉक करें, ऐसे आपने ये जो है कर सकते हैं सिटी का टूर। बहुत साफ़ सुथरी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चल रही हैं यहाँ पे, पार्क्स हैं, काफ़ी प्यारा माहौल है। ये नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया है, ये बड़ा फेमस पॉइंट है। यहाँ पे अंदर सारा म्यूज़ियम और ये सब चीज़ें हैं। नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। See how beautiful Melbourne city is. So Federation Square is opposite there. National Council of Melbourne. This is Federation Square of Melbourne. This is like cinema, museum, and that is a
Well, what do you feel like eating? What's your go-to? These textures have immense power over economy, society, and Captain Matthew Finder.